Hello, how are you all? So, we are meeting again. How are you, my dear learners of class 12? How are you all? Yes. So, today we are here with the next poem of your syllabus, A Thing of Beauty. And it's written by John Keats. So, get ready. You have to listen to the explanation very attentively. Yes. Once again, good evening, all of you. Yes, the poem has been written by John Keats, and John Keats is a poet who loves nature. He finds beauty in the nature. So, and this poem, A Thing of Beauty, is a very famous poem. And the first line of the poem, A Thing of Beauty is a joy forever, is very, very famous. And it is used by people if they have to refer to something beautiful, something which gives you joy forever. जो एक कोई भी एक ऐसी चीज अ, जो कि आपको सुंदर लगती है और विद टाइम आप उसको और ज्यादा पसंद करते हैं, आपका प्यार उसके प्रति कम नहीं होता. That is what the poet wants to say in this poem. A thing of beauty is a joy forever. Forever means hamesha. And he says your love towards this, it goes on increasing. Right? So let's understand the background of this poem. The poem A Thing of Beauty, written by famous English poet John Keats, is an extract from Endymion, a poetic romance. Means the poet wrote a big uh, poem, Endymion, and this is a part of it. A small part of it has been taken for your syllabus, right? The poem is based on a Greek legend wherein a young shepherd named Endymion, who fell in love with the moon goddess Cynthia, and in quest of his lady love, he journeyed through the forests and under the sea. He says कि ये जो एंडीमियन पोएम है, ये एक ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीक कहानी पर आधारित है, जिसमें एक शेपर्ड है. शेपर्ड कौन होता है? गडरी, जिसका नाम है एंडीमियन, और वो मून गॉडेस सिंथिया से प्यार कर बैठता है और उनको ढूंढने के लिए वो जंगल, समुद्र, सब जगह जाता है. So the theme of the poem is nature, beauty, and youth. Keats worshipped beauty and considered it as a heavenly drink which soothes us and enhances our health, gives us sound sleep and mental peace. So, this poem is basically uh, about the beauty of nature. Whatever happens, certain things in the nature which soothes our mind, which give us mental peace. When we think of them, we get sound sleep. Right? It is like a, जैसे कहते हैं ना कि अमृत बरस रहा है आसमान से. It is like that. So, shall we begin with the poem? Right. Let's have an overview of the poem. In this poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever and it gives us endless joy. See, the first line of the poem is a thing of beauty is a joy forever. Joy, you all know. A thing of beauty is a joy forever and it gives us endless, endless joy. Joy
which doesn't end. It has eternal beauty which never fades away. That means that thing of beauty, eternal, हमने पहले भी पढ़ा है poem में, which is always there, which keeps on, which never fades away. It enables us to live comfortably and blissfully. This thing of beauty gives us joy, gives us happiness. It is like a blessing on us. हम पर आशीर्वाद है और उसके कारण हम comfortably अपनी जिंदगी बिता पाते हैं. A beautiful thing is like a shady shelter, as cool as quiet bore, which gives us sleep full of sweet dreams, good health and mental peace. कहते कि कैसी ये ब्यूटीफुल थिंग, कैसी एग्जाम्पल दे रहा है पोएट कि कैसे कैसे हमारे लिए अच्छी है. जैसे कि गर्मी में पेड़ की छाया, जिसके नीचे हमें ठंडी ठंडी हवा मिले और मीठे सपने आए, हमारी हेल्थ ठीक हो और हमें मेंटल पीस मिले, दिमागी शांति मिले. सोचिए ऐसी चीज कितनी अच्छी रहेगी ना. The poet adds that this happiness is because of the man's connection with the earth. Through these memories, man can sustain a contented life. So, what is the poet adding now? He says कि this happiness, ये हैप्पीनेस कैसे मिलती है इंसान को, क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है. ठीक है ना, पृथ्वी पर ही तो ये नेचर है. दीज ब्यूटिफुल थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम द अर्थ ओनली, राइट. थ्रू दीज मेमोरीज मैन कैन सस्टेन ए कंटेंट. और ये जो यादें हैं ये मनुष्य को एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद करती हैं. As good men on the earth are very scarce, man feels distressed. अब अच्छाई बहुत कम है ना पृथ्वी पर, तो बहुत सारी परेशानियां हैं मनुष्य की जिंदगी में. Some experiences and situations fill man's heart with pain. ऐसे कई अनुभव होते हैं, ऐसी कई हालात होते हैं जिससे मनुष्य का जो हार्ट है वो बड़ी परेशानियां होती हैं मनुष्य को. But when he sees something beautiful, his sadness goes away and it is replaced with immense joy and pleasure. लेकिन ऐसे हालात में भी जब वो बहुत परेशान है, निराश है, अगर वो किसी ब्यूटीफुल चीज को देखता है तो सैडनेस गोज अवे और उसकी जगह क्या आ जाता है, खुशी और जॉय. जॉय एंड प्लेजर, खुशी और आनंद. Some of these things are the sun, the moon, the old and the young trees, which provide shade, the daffodils in the green fields, the streams which cool the earth during the summer, and the ferns and the musk roses. He says that अब ये ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं. पोएट गिव्स अस एग्जाम्पल्स, जैसे द सन. सन नो डाउट, अगर सन ना हो तो हमारी लाइफ क्या हो. एंड द मून, मून ऑल्सो गिव्स अस पीस, है ना, कितना शांत, तो उसको देख के बड़ी ठंडक मिलती है. ट्रीज एंड प्लांट्स, प्लांट्स कितना कलरफुल बनाते हैं लाइफ को. ट्रीज हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. देन द डेफोडिल्स, देन द फ्लावर्स, देन द ग्रीन फील्ड्स, देन द स्ट्रीम्स, रिवर्स, they give us cool air in the summer, and then the fragrance of the roses and other flowers. The poet then adds that beauty can be found everywhere, even in the stories that we may have heard or read. Poet says that not only this, we can find beauty everywhere. There are some stories which give us so joy and pleasure and happiness. There might be some stories which you have read earlier and they might be giving you joy.
Then the poet talks about the mighty dead, who are the ancient, powerful, and brave men who had done noble deeds in the past and are now dead. फिर ऐड करते हैं पोएट जॉन कीट्स कि जो माइटी डेड माने वी कैन से आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जो कि बड़े पावरफुल रहे और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, तो उनको जब हम याद करते हैं, लाइक योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर्स फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, तो आज भी आप थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन होते हुए भी आप उस उनके किए हुए कार्य को बड़े गर्व से सबको बताते हैं, isn't it? He refers to the beautiful stories of the great men that we either heard or read. He tells us, like जो बहुत महान पुरुष रहे हैं उनके बारे में सुनना पढ़ना, वो भी हमको बहुत खुशी प्रदान करते हैं. So they are also beautiful. These stories have lifelong impressions on us and we feel happy. So, such stories, such deeds give us happiness throughout the life. Furthermore, Keats paints a picture of an endless fountain of nectar that pours the heavenly bliss of nature into our hearts. This immortal drink is a source of immense joy for us. और क्या ऐड करते हैं कि एक मतलब ये जो स्टोरीज हैं, ये जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, ये किस तरह से, ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, द सन द मून, पोएट उनको किससे कंपेयर करते हैं कि ये एक तरह से एक ऐसा फाउंटेन है जिसमें से अमृत स्वर्ग से हमारे लिए हमेशा बरसता रहता है. एंड दिस इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल जो मरे ना, अमृत जिसे हम कहते हैं, दैट इज इमॉर्टल ड्रिंक, इज अ सोर्स ऑफ इमेंस जॉय फॉर अस. ये हमेशा हमें खुशी प्रदान करते हैं, बहुत सारी खुशी देते हैं. So, a poem is almost clear to you that what the poet is talking about. Poet says there are beautiful things which provide us joy and happiness, and that beauty never fades away. It goes on increasing with the time. And then he says there are so many sorrows in the world, and in spite of that, whenever we see so many things, we find that there is happiness in them. Tell her to. So then he talks about those beautiful things. Then he talks about so many uh, good deeds, brave deeds of our ancient ancestors, then great men, and he then compares them with the fountain from where the immortal drink keeps on pouring on us. हम पर हमेशा उनका अमृत बरसता रहता है. So let's now understand the poem. A thing of beauty is a joy forever, isn't it? Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So let's understand. Let me first recite the poem. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, and of all the unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon,
There is some typing error I find. Sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, against the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. So, this is the poem. Let's just have a glance of difficult words. Bore quiet, a peaceful or shady place to relax. Morrow, every morning, the following day, every the day which comes, wreathing, encircle, surround. Despondence, depressed, gloomy, sad. Boon means blessing. Then rills, small streams. Grandeur, glorious. Dooms, death or destruction. Brink, edge. So these were few difficult words which I wanted you to be clear about. Now let's go through the poem. Now let's understand the poem. A thing of beauty is a joy forever. Very clear? कोई भी सुंदर चीज हमेशा खुशी देती. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. He says, the love towards that beautiful thing will keep on increasing. Your love towards it will never fade away. You'll never say, it is nothing. Your love will keep on increasing with the passing time. But will keep a bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So, what will this beautiful thing do? A thing of beauty is for us. What does that do for us? It is like a shady place in summer. It is like having sweet dreams in sleep. It is like having good health. It is like breathing calmly. समझ रहे हैं आप कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग है ये हमारे लिए क्या करती है हमारी लाइफ में. जैसे गर्मी में एक छायादार जगह मिल जाए पेड़ के नीचे तो कितनी शांति मिलती है. उसी तरह से जैसे नींद अच्छी सी आई हो और आपने मधुर स्वप्न देखे और जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है और जब आपकी ब्रीदिंग बड़ी नॉर्मल तो समझिए तब आप हैप्पी मूड में होते हैं. राइट. Therefore, on every morrow, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? It is so. Every day, every day, what do? We start our day with connecting ourselves to the nature. What do? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इनको देखकर खुश होना चाहिए. प्रकृति क्या है हमें खुशी प्रदान करती है. लाइक आपने देखा पीपल when they see the sun in the morning they feel so happy कि चलो आज today we are going to have a sunny day है ना. इसी तरह से at night when you see the moon in the sky you feel so happy है ना. आजकल तो वैसे भी पॉल्यूशन में जब हमें मून और स्टार्स नजर आ रहे हैं तो वी फील सो हैप्पी कि द स्काई इज क्लियर इजंट इट. तो पोएट सेज सो एवरी डे वी ट्राई टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद द नेचर. हमें अपने नेचर से कनेक्ट करने की हम नेचर मीन्स प्रकृति. राइट. नेचर स्वभाव के लिए भी हम कहते हैं हर नेचर इज वेरी बैड. यहाँ पे वो वाला नेचर नहीं है. सो बी केयरफुल. राइट. Nature here is prakriti. So every day we try to connect to the nature. Spite of despondence,
of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So he says, spite of despondence means spite of uh, depression, spite of so many sad things happening in our life. Because he says of the inhuman dearth of noble natures कि पृथ्वी पर अच्छे लोग बहुत कम हैं. ये भी एक कारण है दुखों का, है ना. वो दूसरों को तकलीफ दे के बड़े खुश होता है. Of the gloomy days, उदासी भरे दिन, of the unhealthy and over darkened ways made for our searching, और ऐसे दिन जब हम अच्छे नहीं हैं, जो उदासी से भरे हुए, अंधकार से भरे हुए दिन हैं. Yes, in spite of all, इन सबके बावजूद, in spite of all, इन सबके बावजूद, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. There are things. This beauty here, poet is addressing to nature. So he says, still there are so many things which gives us joy. जैसे हमारे उदासी भरे दिल में से उदासी को दूर करते हैं. What are those things? है ना, some shape of beauty. What are those things? Let's see. Such as the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. ये इतना सा पार्ट ना गलत ऐड हो गया कैसे पोएम में, पता नहीं. सो इसको हम यहाँ से 4 से लेकर और 99 तक मत देखिए इसको. तो व्हाट आर दोज थिंग्स विच मूव अवे डार्कनेस फ्रॉम हर स्पिरिट्स. हमारे मन से अंधेरा कैसे, कौन सी चीजें दूर करती हैं? द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, प्लांट्स एंड ट्रीज, स्प्राउटिंग अ शेडी वून. मतलब ये कैसे है हमारे ऊपर, जैसे कोई ब्लेसिंग है, वरदान है ये हम पर. फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स. जैसे आप कुछ भी नेचर को देखें तो नेचर बड़ी पॉजिटिविटी भरती है हमारे अंदर, हमारे दिलों में, है ना. कि सब कुछ खराब हो तो भी एक आशा की किरण होती है. जैसे फ्लावर्स, हम जब कलरफुल फ्लावर्स को देखते हैं तो कितनी पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर. with the green world they live in and clear rills. So when you see the greenery, the forests where all these things are there, clear rills, छोटे छोटे झरने, है ना, छोटी छोटी नदियां, that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. So ये सारी चीजें कैसे हैं? जैसे आपने देखा है कि बहुत गर्मी में अगर आप पानी के पास से भी गुजर जाएं तो ठंडी हवा आपके ऊपर आती है, isn't it? जैसे कि जंगली जो रोज होते हैं, जैसे फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है. और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल पोएट देते हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. ग्रैंडियर मीन्स ग्लोरियस. सो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हु आर नो मोर नाउ, हमारे पूर्वज, उनके महान कार्यों के बारे में जब हम सोचते हैं और जब हमें पता चलता है, वी फील वेरी हैप्पी. दैट जॉय is forever, isn't it? All lovely tales that we have heard or read. अब जैसे जो ग्रेट मैन है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट महात्मा गांधी, तो कोई फॉरेनर्स के बीच में भी अगर हम उनके बारे में बताते हैं, वी फील सो प्राउड. ही वाज एन इंडियन एंड आई एम आल्सो एन इंडियन. तो वो हमारे देश के थे तो हम खुशी खुशी, है ना, उन्हें बताते हैं. सो जो ग्रेट मैन है उनकी स्टोरीज को जब हम जानते हैं तो दैट ऑल्सो गिव्स अस जॉय. All lovely tales that we have heard or read.
तो जितने भी महान लोगों की कहानियां हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, वो भी हमें हैप्पीनेस और जॉय देती हैं। हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में भी जो बातें, अच्छे अच्छे कार्य उनके, जो बहुत महान कार्य उन्होंने किए, वो भी हम गर्व से सबको बताते हैं। Isn't it? An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. Where it says all these things, the nature, so many examples of nature he has given. Then he talks about the great deeds of our ancestors. Then he talks about the stories of the great men. He says all these things are like a fountain from where the immortal drink keeps on pouring on us. क्या मतलब कि ये सारी बातें एक इस तरह से हैं जैसे कि हेवन में कोई फाउंटेन है और उसमें से हम पर एक अमृत का छिड़काव हो रहा है. So this is the poem, and I'm sure that the poem is very clear to you. Let me just conclude it in few lines. The poet says that a beautiful thing gives joy forever, and it is like जैसे गर्मी में छाया मिल जाए पेड़ की, जैसे आप सोए हों और बहुत मीठे मीठे सपने देखे हों आपने, तो कितना मूड अच्छा होता है जब आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, जब आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल ठीक चल रही है, नॉर्मल. When you are fit and fine, you feel happy. He says, although there is so much sadness on earth, क्योंकि बहुत बुरे बुरे लोग हैं, there is so much sadness on earth, and there are many days when we are very sad and gloomy, but when we look at the sun, the moon, the trees, the plants, and the flowers, and the streams, nadi, jharne, colorful flowers, they all feel happiness in us. They all feel positivity in us. And in the same way, he says, the great deeds of our ancestors, stories of great men, they all give us happiness and joy. And this joy and this happiness never fades away. It is like an immortal drink pouring unto us from the heaven. So, the poem now I think is very clear to you. Do one thing, students, try to go through the poem once again, right? So that the meaning and explanation becomes clear to you. Now let's go through the poetic devices. Metaphor. I told you we have dealt with this device earlier also. Metaphor is implying directly. Like I gave you an example, she is a tigress, है ना. So अगर मैं कहती हूँ he fought like a tiger, when I add like or as, that means it is a simile. When I say he was a tiger, as और like नहीं यूज किया और किसी चीज से कंपेयर किया, डायरेक्ट कर दिया उसको, है ना. इनडायरेक्ट होता है जब हम एज और लाइक डालते हैं. एज और लाइक वर्ड हमने नहीं ऐड किया, एंड आई सेड ही वाज अ टाइगर, ही इज ए टाइगर. दैट इज metaphor. And the examples of metaphor in this poem are bore quiet, sweet dreams, flowery band, the pall, dark spirits, unhealthy and over darkened ways, endless fountain of immortal drink. So these are the examples of metaphor. Then comes alliteration. These Some of the poetic devices are very common, and you'll find them in every poem, right? So one of them is metaphor, then alliteration, then simile. So the next poem, but we have many examples of metaphor, right? So the next is alliteration. What is alliteration? You might be very knowing this meaning now. That is repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words.
So the same consonant sound is when repeated in two or more than two words, that is alliteration, like noble nature, cooling covered, band to bind. Right? So next comes personification. What is personification? It is personifying something non-human. Like हम किस he she हम यूज करते हैं men and women, male फीमेल, राइट। लेकिन जब हम किसी एनिमल के लिए या नेचर के लिए या किसी भी और ऑब्जेक्ट के लिए ही और शी कह के बात करते हैं, दैट इज personification, right? So he says, inhuman dirt of noble natures, shape of beauty, daffodils, rills that for themselves make gains the hot season. ये सारे personification के examples हैं. Now I am adding one new poetic device in this poem is their transferred epithet. When an adjective is transferred to a different noun, ठीक है ना, तो जो एडजेक्टिव है वो दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है. एग्जाम्पल्स आर unhealthy and over darkened ways, gloomy days. These two examples are of transferred epithet. Then metonymy. Metonymy is change of name. माने किसी वर्ड के लिए हम कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं. जैसे समर के लिए यहाँ पर पोएट ने यूज किया हॉट सीजन. वो समर भी कह सकता था ना, उसने समर नहीं कहा, लेकिन हमको हॉट सीजन से क्लियर हो गया, राइट? सो दैट इज मैट्रोनिमी. देन देर इज वन मोर एग्जाम्पल, ग्रीन वर्ल्ड. अब ग्रीन वर्ल्ड क्या हुआ? नेचुरली इट इज नेचर ही इज टॉकिंग अबाउट, बट उसने वर्ड कोई और यूज किया, नेम को चेंज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, दैट इज मैट्रोनिमी. Then comes oxymoron, words that contradict themselves. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आ, आपस में ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. जैसे माइटी डेड. अब डेड भी कह रहे हैं और माइटी भी कह रहे हैं, है ना. जो डेड है वो माइटी कैसे हो सकता है और जो माइटी है वो डेड कैसे हो सकता है, लेकिन मीनिंग हमको क्लियर हो गया. तो दिस इज ऑक्सीमोरन. देन इज इमेजरी, इमेजेस, जहाँ पर पोएट इमेजेस, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस सजेस्ट करता है. जैसे फ्लारी रेड, शेडी बून, ग्रीन वर्ल्ड, क्लियर रिल्स, कूलिंग कवर्ड, ग्रैंडियर ऑफ द डून्स. ये सारे जो हैं ये डिफरेंट इमेजेस हैं विच पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट, एंड वो हमें एक माहौल बनाने के लिए पोएट ने ये डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे कि हम एकदम इमेजिनेशन में पहुंच जाएं, लाइक हम उन सब चीज़ों को सोचने लगे. Now come the multiple choice questions, which you have to be very careful about, because this time you'll be having many multiple choice questions. That is why I am emphasizing so much, because you're not going to find them in any ref book. So I'm trying to do as much as I can, and we'll have to take one more part of this poem, in which we'll be adding RTC's short questions and long questions. Just don't worry, because if I add everything in one lesson, that becomes too long. So right now, let us deal with these MCQs. Name the poem and the poet. Yes, you all know that this is the very favorite question of mine, because I want you all to know the poems and their poets. The moment the poem is mentioned, you should at once remember the poet's names, right? Let's see. My Mother at 66 by John Keats, Keeping Quiet by John Keats, Photograph by John Keats, A Thing of Beauty by John Keats.
So this is very clear because you all know that we are discussing a thing of beauty and it has been written by John Keats. Good. Let's take the next one, and the next is a thing of beauty is an extract form. Where has it been taken from? Yes, originally it has been written in Endymion from John Keats. So, first option is the correct option. So, you can just go through the other options too. Ode to a bird, ode to a nightingale, none of the above. No. So, the option A is the correct option, right? The next is, what are the things of beauty mentioned in the poem? So, just remember what things were mentioned, what the poet says, which things give you happiness: the sun, the moon, the trees, the rills, the streams, the daffodils. So, what do you think the correct option is? Because option A is also correct, option B is also correct, and option C is also correct. Yes. So, here the correct option is option D, all of the above. Right? Now let's move on to the next one. How is a thing of beauty a joy forever? कैसे कोई ब्यूटीफुल थिंग हमेशा के लिए जॉय हो सकती है? कैसे खुशी दे सकती है? And the options are because it is beautiful, because its beauty never ends and leaves a lasting impact, because it is joyful, none of them. So which one do you think is the correct option? Because the beauty never ends and you keep on loving that thing. So now you know, right? Option B is the correct one over here. Let's move on to the next one. And question 5 is, what does a thing of beauty do for us? क्या करती है ये सुंदर चीज हमारे लिए? Gives hope, gives joy, takes away pain and suffering, or all of the above. यस, होप भी देती है, पॉजिटिविटी देती है, जॉय देती है, और हमारे मन की सारी पेन एंड सफरिंग्स ले लेती है. सो विच इज द करेक्ट वन? यस, अगेन ऑप्शन डी, all of the above is the correct one. Now the question number 6, whose loveliness will keep on increasing? Whose loveliness? Of hills, of rills, of mountains, of all beautiful things. Yes, loveliness of all the beautiful things will keep on increasing. Very good. Now, what is a bore? A river, a shady tree, a mountain? None of the above. It's the option B, a shady tree. Right? Now, let's move on to the next question. What are the mighty dead in the poem? Yes. Respect-worthy ancestors, especially emperors, dead animals, dead birds, dead plants. Ancestors word मैंने बहुत बार यूज किया था, and that will help you to get the correct answer. वो पूर्वज जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो वर्दी हैं रिस्पेक्ट के वर्दी कौन होते हैं? जो अच्छे कार्य करते हैं, और खासकर राजा महाराजा, वो लोग दे आर पावरफुल पीपल. Right? So the option A is the correct option. Gloomy means dark spirits, unhealthy things, healthy things, dull and depressive. Yes, gloomy means dull and depressive. So the option D is the correct one. Now, the last MCQ, there can be many more MCQs, but I could only add, because otherwise the lessons becomes too long. So maybe we find a deal with some few
MCQs in the next part too. Why do we need a flowery band? To feel happy, to smile, to have strength and joy in spite of sadness, to dance. The poet talked about there is so much sadness, but we need to have strength and joy. So every morrow we read a flowery band. Yaad aaya? Right. Now you can quickly tell me. So the option C is the correct option. So these were the few MCQs, and um, my dear learners, I you can say that I want you to go through this poem, please, because this poem is a bit difficult. It's not that easy. So right now, just we have just dealt with this poem. If you can't read it tonight, please go through this poem tomorrow, बिकॉज उससे आपको पोएम और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी. अगर आप कई दिन बाद पढ़ेंगे ना, तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी. और अगर अभी आप पढ़ लेंगे एक बार एक रीडिंग, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस पोएम एटलीस्ट वंस, either tonight or tomorrow, right? And do one thing, note down all the difficult words, poetic devices, plus these MCQs in your registers. You all should note it down, because when you revise, these will be very helpful to you all, right? In the next part of this poem, we'll be dealing with the short and long questions and RTCs too. So, now what you all have to do? Yes, you all have to like this channel and subscribe. Those who haven't subscribed, please subscribe. Yes, like and subscribe to my channel. So, this is all for tonight. Good night and have sweet dreams. See you soon.